Hello everyone, this is Anshuman Mishra and you are watching my YouTube channel English Study Point. And today we are going to discuss the very important topic of English grammar, that is narration, means direct speeches and indirect speeches. What is the meaning of narration? Narration means to narrate something. To narrate means or to tell something. To narrate something or to tell something. Okay, there are two types of speeches and narration is always a third person narrative. You can say third person narrative होता है ये indirect speeches में जब हम इसे change करते हैं. There are two types of speeches in narration, that is direct speech and indirect speech. Okay, direct speech has two types of sub speeches: reporting speech and reported speech. Okay, यहाँ पर एक नीचे एक टेबल दी हुई है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. यू कैन अंडरस्टैंड बेटर विद दिस एग्जाम्पल. The dotted lines which are written, which are given here before comma, those are reporting speech, and under inverted commas the dotted lines are given, they are reported speech. So reporting speech and reported speech, these are the two parts of direct speech. Okay, and other than direct speech there is indirect speech. So these are the two parts of narration, direct speech and indirect speech. हम यहाँ पर रूल्स देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के. Okay, one example is given here. He said to me, I am going to the market. Okay, now he said to me is reporting speech and I am going to the market, it is reported speech. हम इसमें देखते हैं कौन क्या है. Reporting speech, he subject, said reporting verb, to preposition, me object. Okay, and then reported speech, I subject, am reported auxiliary verb means helping verb, going reported main verb, to preposition, the definite article, and market is object. So इसमें हमने क्या देखा कि both the speeches have everything, every part of a speech, noun, pronoun, subject, object, preposition, everything. It means उन दोनों का अपना अपना एक अलग अलग सेंस है. एंड whenever we are forming into indirect speech, उसे हम एक साथ together लिख देते हैं. Okay, with the help of any conjunction and some rules. One very important and basic rule is there for narration, that is indirect speech is always in assertive sentence. Okay, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच चाहे इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी या इम्परेटिव या ऑपरेटिव ही क्यों ना हो, उसे हम हमेशा असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं व्हेनेवर वी आर चेंजिंग it into indirect speech. Okay, so remember this basic point that indirect speech is always in assertive sentence. Okay, ये हमें हमेशा याद रखना है. Okay, now we are heading towards rules of narration from direct to indirect speech. Some rules are given here. Changes of personal pronouns from direct to indirect speech means किसी personal pronoun में changes कैसे होंगे direct से indirect speech में. So the table is given here. अगर reported speech में these personal pronouns are given, first person, second person, third person, so they will be changing according to these given table, according to reporting speech. Okay, reporting speech के हिसाब से वो change होंगे. Suppose that first person means I, me, mine, we, us, our and ours. If it is given in reported speech, first person, so it will be changing according to subject. Okay, it will be changing according to the subject. And when second person is given, you, your, yours, so it will be changing according to object. Okay, सेकेंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. Now any third person, if there is in reported speech, he, him, his, she, her, hers, it, its, they, them, their, theirs, and any noun. Any noun is also we can consider into a third person. So if any third person is there, so there will be no change. Okay, there will be no change. First person according to subject, second person according to object, third person
सो नो चेंज। एक रूल दिया हुआ है नीचे, इसे आसानी से याद करने का, SON upon 1 2 3, son upon 1 2 3, okay, means if first person according to subject of the reporting speech, second person in reported speech, so according to the object of the reporting speech, and third person in reported speech, so there will be no change in third person. Okay, so you can remember this rule very easily. Okay, now changes in some words from direct to indirect speech. Okay, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि प्रोनाउंस के चेंजेस हमेशा होंगे, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, देयर विल बी ऑलवेज द चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड इन दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए इनमें भी हमेशा चेंजेस होंगे, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में क्यों ना हो। ओके, इनमें चेंजेस होंगे हमेशा। सो if direct speech has these words which are given in left side, and indirect speech has these words which are given in the means indirect speech we will change according to these words, means डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड्स हैं तो हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, नाउ विल बी चेंजिंग टू देन। ओके, टुडे, दैट डे, टुमारो, the next day or the following day, yesterday, the previous day or the day before. Okay, tonight, that night, this, that. Okay, here, there, hither, thither, hence, thence, and thus will be changing into so. So ये सारे changes हमेशा होंगे if the whether the reporting speech is in present tense, past tense or future tense, in any tense. Okay, the changes of pronoun and the changes of these words will always occur in indirect speech. Okay, now we are coming into the main rules. If reporting speech is in present tense, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में है, सो नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आप याद रखिएगा, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी चीज़ें बदलेंगी, प्रोनाउन एंड वर्ड्स एवरीथिंग, बट वी विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, if assertive sentence is there in the reported speech, okay, so what are the rules? Say or says will be changing into same, say और says same रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, ठीक है, यानी कि if रिपोर्टिंग स्पीच में say या says है तो वो सेम रहेंगे। say to tell में बदल जाएगा and says to will convert into tells. Okay, same is am are saying will be same, and is am are saying to will be is am are telling. Okay, has have said will be same, and has have said to will be has have told. Okay, and we will always use conjunction that if assertive sentence is there in reported speech and reporting speech is in present tense. Okay, conjunction that use करेंगे. For example, he says I am doing my work. Okay, he says I am doing my work. He says means reporting speech present tense में है, so he says है, says ही रहेगा. Okay, then conjunction that, then he, I is the first person, so it will be changing according to the subject of the reporting speech. Subject क्या है? he, तो he हो जाएगा. Okay, he says that he is am doing my work. It was in present continuous, so it will be same, present continuous ही रहेगा, he is doing his work. Okay, and then full stop. Okay, he says to me I am doing my work. Okay, says to tells, okay, he tells me, conjunction that I is the first person, so it will be changing according to the subject of the reporting speech, so he. Okay, he tells me that he is doing his work. Okay, my is also first person, so according to the subject, so it is in possessive case, so subject भी possessive case हो जाएगा his. Okay, that he is doing his work. Okay, etc etc etc. These are the examples of assertive sentences. Okay, so these were the rules. Now if interrogative sentence is there, if any interrogative sentence is there
in reported speech. Okay, and reporting speech is in present tense. So say or say to will be changing into ask. Okay, says and says to will be changing into asks. Okay, is am are saying. Okay, is am are saying or saying to will be changing into is am are asking. Has have said or said to will changed into has have asked. Okay, now if reported speech begins with helping verb, अगर reported speech helping verb से start हो रही है यानी किसी भी auxiliary चाहे वो प्राइमरी हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे. ओके, एंड इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो कंजक्शन हमारा सेम क्वेश्चन वर्ड ही एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरीके से रोल कर लेगा, प्ले कर लेगा. ओके, एंड आफ्टर मेकिंग इट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच रिमूव क्वेश्चन मार्क हम रिमूव कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं हम. ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल. ही सेज आर यू गोइंग टू दिल्ली. अब आर दिया है, आर इज द हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. सो ही सेज, नाउ इफ या वेदर कंजक्शन दोनों में से कोई लगा सकते हैं. ही आस्क्स इफ. ओके, नाउ असर्टिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट को वर्ब से पहले लाना पड़ेगा. इफ सब्जेक्ट है यू, यू इज द सेकंड पर्सन, विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. अब रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम थर्ड पर्सन एज्यूम कर लेंगे कि थर्ड पर्सन होगा, तो यह यहाँ पर ही और शी कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो ही आस्क इफ ही इज गोइंग टू दिल्ली, टेंस सेम रहेगा, इफ ही इज गोइंग टू दिल्ली. He says to me, why are you going to Delhi? Now it is beginning with the question word, so वही question word हो जाएगा आपका conjunction. He asks me why, और subject को पहले ले आएंगे हम verb के. I, you is the second person, according to object change होगा, object है me, तो ये me जो object जब subject बनेगा तो I हो जाएगा. Okay, so why I am going to Delhi, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप. ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, सो दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आप हमेशा बस इतना याद रखिए कि अगर इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, सो कंजक्शन इफ और वेदर, एंड रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, सो द कंजक्शन विल बी सेम क्वेश्चन वर्ड. जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का रोल प्ले कर देगा. ओके, now the next rule we are talking about if reported speech. अब ये यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ये हमेशा कभी भी चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, if reported speech is any universal fact, historical fact or event, habitual action, proverb, quotation, idiom phrases, popular statements, definitions, प्रीचिंग्स, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच में हैं तो वो कंजक्शन के साथ एज इट इज़ लिख दी जाती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती हैं. ओके, इट विल बी अनचेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, वेदर इट इज़ एनी टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच. किसी भी टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच क्यों ना हो, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एज इट इज़ कंजक्शन के बाद लिख दी जाएंगी. ओके, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. He says sun rises in the east. Now sun rises in the east ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, we cannot change it. Sun rises in the east. So he says that कंजक्शन लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अंदर असर्टिव सेंटेंस है. So he says that sun rises in the east. सेम उतार देंगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. He said Prithviraj defeated Gauri in 1191. It is a historical event. Historical event है, fact है. Okay, तो हम इसे change नहीं कर सकते. He said that Prithviraj defeated Gauri in 1191. Okay. सो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है. ऊपर दिए गए एनी फैक्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, सो वी विल नॉट चेंज इट. इट विल बी अनचेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो ये दिस इज अ वेरी बेसिक रूल, कॉमन रूल रिगार्डिंग नरेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट
thing is we are talking about if reporting speech is in future tense. अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो भी हम सेम वही करेंगे. देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. If reporting speech in present tense, so no change in the tense of reported speech, and if reporting speech is in future tense, there will be no change in the tense of reported speech. Fine, कोई changes नहीं होंगे. Now अगर assertive sentence दिया है reported speech में तो कैसे change करेंगे? Reporting speech के reporting verb will or shall say same रहेंगे, and will or shall say to will be converted into will shall tell. Okay, will be shall be saying same, will be shall be saying to, will be shall be telling. Okay, will have shall have said same, and will have shall have said to will be converted into will have shall have told. Okay, कंजक्शन इसमें भी दैट का यूज़ करेंगे. असर्टिव सेंटेंस है तो दैट का ही यूज़ कर दैट कंजक्शन ही यूज़ होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही विल से आई एम वर्किंग नाउ. ही विल से मीन्स ही विल से सेम रहेगा, एंड कंजक्शन दैट, देन आई एम वर्किंग नाउ. आई इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट विल बी चेंजिंग मीन्स ही. सेम टेंस रहेगा, ही के साथ इज लगेगा उसी टेंस में. सो ही विल से दैट ही इज वर्किंग देन. Okay, next example, he will say to me I am working now. Okay, so he will say to, say he will say to will tell हो जाता है, so he will tell me that conjunction, then I am working now, same, he is working then. Okay, so these are the examples of assertive sentence. If reporting speech is in future tense and any assertive sentence is there in reported speech. Okay, so next, interrogative sentence. If reported speech is in interrogative sentence and reporting speech is in future tense. Okay, will shall say or say to will be converted into will or shall ask. Will be shall be saying or saying to convert into will be shall be asking. Will have shall have said or said to will convert into will have shall have asked. Okay, so and same rule यहाँ पर भी अप्लाई होगा. if reporting speech begins with helping verb conjunction if or whether. if reporting speech begins with question word conjunction same word. Okay, and the same rule, remove question mark whenever you are transforming into indirect speech, because क्योंकि हम यहाँ पर assertive sentence बनाते हैं हमेशा indirect speech को. Okay, so for example, he will say have you done this work. Okay, he will say ask, he will ask. Okay, have auxiliary से helping verb से start हो रहा है, so if or whether both conjunction we can use. he will ask if he has done his work. Okay, you is given, you is the second person. ओके, सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. मैंने कहा ऑब्जेक्ट अगर दिया ना हो रिपोर्टिंग स्पीच में, यू कैन एज्यूम इट इन एज अ थर्ड पर्सन. ओके, सो ही विल आस्क इफ ही हैज़ डन दैट वर्क. दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट, पहले बता चुके हैं. नेक्स्ट, he will say to me why have you done this work. Okay, now starting with the question word. So he will ask me, same question word will become a conjunction. He will ask me why. You will be converted into according to object me subject के तरीके से यूज होगा तो I हो जाएगा. He will ask me why I have done that work. verb को हम subject के बाद लाएंगे. Why I have done that work. Okay, so ये थे examples when reporting speech is in present tense and when reporting speech is in future tense. टेंसेस के सारे चेंजेस होते हैं व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. वी विल डिस्कस दिस इन second video, second part of narration. This was the first part of narration. I hope that you have got all the points regarding narration and try to do the exercises of narration. Okay, so I think that my topic is clear to you, and
So thank you very much for listening me.